Good afternoon, everyone. My name is Dr. Manish Chauhan, Assistant Professor from School of Agriculture, Adilasi University. So today I am going to deliver my lecture on the topic biofortification of vegetable crops. So let's start the topic. So firstly, we should know what are vegetables. So vegetables are the product of herbaceous plants which are annual, biennial and perennial. Mostly they are annual whose plant parts such as fruit, leaves, stem, leaves, petioles are used as culinary or consumed as raw. So the fruit vegetables such as tomato, bell pepper, chili, brinjal, watermelon, muskmelon, leafy vegetables like spinach, amaranthus, palak, stem vegetables like nol khol, asparagus, flower vegetables like cauliflower, broccoli, and root vegetables like carrot, radish, turnip, and beetroot. So coming to the main topic, biofortification. So the deficiencies of vitamins and minerals in our diet which cause the malnutrition, which is popularly known as hidden hunger. Increasing population, inadequate food and nutrition, hunger, malnutrition of vitamins and micronutrients. These are the biggest challenges for most of the nations across the world. The deficiency of vitamin A is predominant in developing countries among children and women, which leads to more than 6 lakh deaths each year globally among children which are below than 5 years of age. To overcome from this problem, the micronutrient malnutrition is through biofortification is required. So the biofortification is the process of adding nutritional value to the crop to enhance the quality such as vitamins and minerals. तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टैग लाइन, हेल्थ कम्स फ्रॉम द फार्म नॉट फ्रॉम द फार्मेसी। जो जैसे कि हमें पता है कि जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, दीज आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। अगर हम जो है बायोफोर्टिफिकेशन की हेल्प से, अगर हम जो इसकी जो न्यूट्रिएंट की इनरिचमेंट है इसको बढ़ा दें, तो जो भी हम फार्मेसी के जो सप्लीमेंट्स जो यूज करते हैं, विटामिन ए बी के कैप्सूल यूज करते हैं, उसकी जो है हमें जो है जरूरत नहीं होगी। तो So next one is the main cause of hidden hunger. The main cause of hidden hunger is number one protein deficiency and second is micronutrient deficiency. So biofortification is the solution to overcome from hidden hunger. Next, the concept of biofortification. So biofortification is derived from two words. Bios means life and fortificare means it makes you strong. As you can see in the picture, आप पिक्चर में देख पा रहे हो जो कॉलीफ्लावर है, जनरली जो इसका जो कर्ड है, जो एडिबल पोर्शन है, इसको हम कर्ड बोलते हैं, तो इट इज जनरली वाइट इन कलर। तो बायोफोर्टिफिकेशन के मेथड से जो है हमने इसमें जीन ट्रांसफरिंग के मेथड से जो है हमने जो है इसकी जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज किया, तो इसका कलर जो है पर्पल और येलो हो गया। तो जनरली जो हमारी कलर्ड वेजिटेबल्स होती है वो ज्यादा न्यूट्रिशनल, इसमें जो है ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है कंपेयर टू जो है नॉर्मल वेजिटेबल। और वो कलर वेजिटेबल्स आर ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट रिच। तो वाई बायोफोर्टिफिकेशन, क्यों बायोफोर्टिफिकेशन जरूरी है? तो जो भी हमारी फूड क्रॉप्स है उनमें जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि स्पेशली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसकी अवेलेबिलिटी एनहांस होगी थ्रू बायोफोर्टिफिकेशन। और जो भी मालनरिश्ड पॉपुलेशन है जो कि रूरल एरियाज में रहती है, तो उनके लिए बायोफोर्टिफिकेशन काफी बेनिफिशियल होगा। और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, उन्होंने एस्टिमेट किया है कि बायोफोर्टिफिकेशन की हेल्प से जो है मोर देन 2 बिलियन पीपल जो कि सफरिंग जो कि सफर कर रहे हैं अनीमिया से, जो कि आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, उससे जो उसकी हेल्प से हम जो है बायोफोर्टिफिकेशन की हेल्प से जो है क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन।
तो जनरली जो है बायोफोर्टिफिकेशन के जो है 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एग्रोनॉमिक बायोफोर्टिफिकेशन, सेकंड वन इज़ कन्वेंशनल ब्रीडिंग, थर्ड वन इज़ जेनेटिकल इंजीनियरिंग। तो एग्रोनॉमिक बायोफोर्टिफिकेशन में क्या करते हैं हम कि एप्लीकेशन करते हैं क्रॉप में जो है जो भी हमारे इसेंशियल फर्टिलाइजर्स होते हैं, स्पेशली जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके जो है इनिशियल स्टेज पे जो है उनकी फोलियर एप्लीकेशन करते हैं। जो हमारे इसेंशियल जो हम जो न्यूट्रिएंट्स जो यूज करते हैं, स्पेशली वो है जिंक, आयोडीन और सिलेनियम। तो उससे क्या होगा कि अ, उसके जो फ्रूट में जो है वो एडिबल पार्ट्स में जो है उसमें जो एब्जॉर्ब कर जाएंगे ये न्यूट्रिएंट्स, तो ये हमारे लिए जो है बेनिफिशियल हो सकता है। तो हम जो है एग्रोनॉमिक बायोफर्टिलाइजेशन से हम इस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड है कन्वेंशनल ब्रीडिंग। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग जनरली जो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है यील्ड, हायर यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस के लिए हम जनरली ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीडिंग में अगर जनरली हम क्या करते हैं कि जो दो पेरेंट्स है उससे जो है हम क्रॉस करते हैं, उसके बाद जो है हम एफ वन तैयार करते हैं, है ना। अगर हम अ, जो है बायोफोर्टिफिकेशन को जो है जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग के साथ जोड़े, तो सिंपली अगर मान लीजिए अगर दो वेराइटीज है, एक वेराइटी जो है हमारी वो उसकी जो है हाई यील्डिंग वैरायटी है, उसकी जो है वो रेजिस्टेंस भी है उसमें, बट उसकी जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम है। और मान लीजिए दूसरी वैरायटी है, उसकी यील्डिंग जो है कम है, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी ज़्यादा है और जो है रेजिस्टेंस भी कम है कंपेरेटिव टू फर्स्ट वन। तो जो हमारा जो जब हम इन दोनों वैरायटी का क्रॉस कर लेंगे, तो जो हमारे पास जो F1 जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा, उसमें जो वो जो है न्यूट्रिशन के जो है उस वैरायटी में जो वो करैक्टर आ जाएँगे। तो ये इस तरीके से हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग से जो है कर सकते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। एंड थर्ड वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप थ्रू द ट्रांसफर ऑफ जीन। जीन की ट्रांसफर करनी है, जीन की मॉडिफिकेशन करनी है, जिससे जो है हम ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है डेवलप कर पाए। ऐसे ही हमारे अचीवमेंट के लिए हमें जो है वेजिटेबल्स में जैसे कि फ्लेवर ऑफ टमाटो है, वो हमारी ट्रांसजेनिक क्रॉप है। फिर हमारा बीटी ब्रिंजल है, वो हमारी जो है ट्रांसजेनिक क्रॉप है। तो नाउ what are the advantages and disadvantages of biofortification method? The first, mineral fertilization. So advantages is it is simple, it is not very costly, faster enhancement, and the disadvantages is it works only with the minerals not suitable for iron, and it is very dependent on crop and cultivars, not possible to target edible organs. And the advantages of conventional breeding is uses natural properties of the crop. And the disadvantages it is time taking. And now the transgenic approaches, the main advantages is it is rapid, unconstrained by gene pool. Gene pool means gene pool, it refers to the combination of all the genes present in the species. The targeting expression in edible organs applicable directly to the allied cultivars. तो द डिसएडवांटेजेस इज इट इज टाइम कंज्यूमिंग, टाइम इसमें जो है बहुत ज़्यादा लग जाता है। इट रिक्वायर्स स्किल्स, कोई आम जो किसान है वो जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम नहीं कर सकता है। एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है। एंड सोशियो इकोनॉमिक इशू रेलेवेंट टू ट्रांसजेनिक प्लांट्स, इसमें जो काफ़ी इश्यूज रहते हैं कि कुछ ह्यूमन मिथ है कि अगर हम ट्रांसजेनिक जो वेराइटीज है, अगर हम इनको क्रॉप से अगर इनको हम खाएंगे इसकी वजह से जो है एलर्जी कॉज हो सकती है, इससे जो है हम हमें जो है डिजीज हो सकती है। तो इट इज अ काइंड ऑफ मिथ। So biofortification in vegetable crops. So these are the different vegetable crops. तो हमें जो है टमाटो में किन किन जो है मिनरल्स और विटामिन की जो है इन्वेस्टमेंट करनी है। तो टमाटो में जैसे कि क्लोरोजेनिक एसिड हो गया, फ्लेवेनॉइड्स, एंथोसाइनिन, फोलेट, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, प्रो विटामिन ए और जिंक की जो है हमें इनरिचमेंट करनी है।
पोटैटो में जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंथोसाइनिन, अल्कलॉइड, अनियन एंड ब्रोकली में सेलेनियम की, लेटस में आयरन की, कैरेट में कैल्शियम की इनरिचमेंट करनी है, रेडिश एंड ब्रासिका स्पीशीज में जो है सेलेनियम की इनरिचमेंट करनी है, पोटैटो बीटा कैरोटीन एंड ल्यूटीन कंटेंट की जो है इनरिचमेंट करनी है, कसावा में जो है प्रोटीन, कैरोटीन, मिनरल कंटेंट, जिंक, कॉपर, आयरन, सेलेनियम की इनरिचमेंट करनी है, ब्रोकली में सेलेनियम की, कुकुम्बर में पोटेशियम की, बीन्स में आयरन की एंड पंपकिन में कैरोटीनॉइड्स की जो है इनरिचमेंट करनी है, ताकि जो है हमारी क्रॉप जो है बायोफोर्टिफाइड हो जाए। So pigments. Next is pigments. So pigments क्या होते हैं? So the pigments are those which are responsible for color appearance in plant tissue and fruit. जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर अपीयरेंस के लिए, जो भी हम देखते हैं रेड कलर है टमाटर का, बैंगन का जो है पर्पल कलर है, तो किस कारण से होता है? पिगमेंट्स की वजह से होता है। तो पिगमेंट का जो सबसे फर्स्ट पिगमेंट है वो है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड क्या होता है? दिस आर द प्लांट पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर ऑफ द प्लांट। तो जैसे कि रेड कलर टमाटो, और ऑरेंज कलर रेडिश कैरेट, एंड येलो कलर बेल पेपर, येलो बेल पेपर एंड zucchini. So carotenoids are the lipid-soluble C40 tetrahydrocannoid compounds. More than 700 natural carotenoids are identified so far. So carotenoids are generally located in the plastids of the green tissues and flowers and storage organs. So the importance, it is the precursor of vitamin A and antioxidants. जो भी कैरोटीनॉइड जिन सब्जियों में कैरोटीनॉइड होते हैं वो रिच सोर्स होते हैं जिसके विटामिन ए एंड एंटीऑक्सीडेंट के। इट प्रिवेंट फ्रॉम द कैंसर and the maintenance of immune system. It protects from the various types of diseases. Generally, there are six types of carotenoids. First one is beta carotene. Orange color of carrot is due to beta carotene. Second is lycopene. Red color of tomato is due to lycopene content. Zeaxanthin. Orange color of orange color of persimmon is due to zeaxanthin content. Uh, Green color of leafy vegetables is due to lutein content. Orange color of pumpkin is due to alpha carotene content, and the red color of many generally spices are due to quercetin content. So these are the different types of vegetables which are rich in carotene. So the highest carotene content is in carrot, 8,246 mg per gram, which was followed by curry leaves, 7,560 mg per gram, and basila, 7,440. So these are the different vegetables which are rich in carotene. Next is anthocyanins. Anthocyanins are colored water-soluble pigments which are belongs to the phenolic group. So the pigments are the glycosylated form. Glycosylated means the attachment of the pigments within the proteins through the enzymatic reactions. The anthocyanins are responsible for developing colors such as red, purple, blue in different fruits and vegetables. So these are the different anthocyanin-rich vegetables like brinjal, asparagus, onion, cabbage, potatoes, black beans, sprouting broccoli, cauliflower, carrot, radish, turnip, rhubarb. So next is betaline. So pigment of it is the pigment of betaline is the pigment of beetroot. So red color of beetroot is due to beta-cyanine pigment, and the yellow color of beetroot is due to the beta-xanthin pigment. So these are genes responsible for pigments. So these are the various genes of different vegetables which are responsible for color development in the vegetable.
First one is OR gene, which is responsible for orange color in potato, and pigments is beta carotene. MYT gene, which is responsible for purple color in potato, which is rich in anthocyanin. CRY2 gene, which is responsible for yellow color in tomato, which is rich in lutein pigment. OR gene, which is responsible for orange color in cauliflower, which is rich in beta carotene. ORE gene, which is responsible for orange color in cucumber, which is also rich in beta carotene content. MYB gene, which is responsible for purple color in red cabbage, which is rich in anthocyanin content, and PR gene, which is responsible for purple color in purple cauliflower, which is rich in anthocyanin, and sweet potato, the IDMYB1 gene, which is responsible for purple color in sweet potato, and it is rich in anthocyanin. So these are some case studies related to the biofortification. So case study first, iodine biofortification in tomato. Martima et al. 2011 conducted an experiment to evaluate the ability of tomato plants to absorb and store iodine in vegetative tissues and fruits. So the materials they are taken first is tomato, reagents like potassium iodide and radioactive iodide are used as a source of iodine. तो इन्होंने जो है टोमेटो के प्लांट में जो है दो ट्रीटमेंट करी है। फर्स्ट वन इज रूट ट्रीटमेंट, सेकंड वन इज लीफ ट्रीटमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस। 2 वीक्स पे करी है, 1 मंथ पे करी है और 2 मंथ पे करी है। तो रिजल्ट क्या, दे फाउंड दैट कि जो रूट ट्रीटमेंट की थी हमने उसमें जो है आयोडीन की एब्जॉर्बेंस जो है ज्यादा है 2 वीक ओल्ड प्लांट्स में कंपेरेटिव टू द लीफ ट्रीटमेंट। Next one is OR gene in cauliflower for improving nutritional security। अभी मैंने जो जीन की बात करी थी, कौन कौन से जीन थे, अभी पीछे जो मैंने बात करी थी कौन कौन से जीन थे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलरिंग के लिए। तो कॉलीफ्लावर में जो है OR जीन है कि जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑरेंज कलर के लिए। तो इसमें क्या किया कि जो हमारे कॉलीफ्लावर की जो कर्ड है, जो व्हाइट कॉलीफ्लावर है, इसमें जो है जीन की ट्रांसफर की, OR जीन की ट्रांसफर करी थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो कलर है वो येलो का कॉलीफ्लावर में चेंज हो गया। एंड और दूसरी पिक्चर है जो है पोटैटो की जो स्किन है जनरली जो कैसी होती है, जैसे कि क्रीमिश कलर की होती है। तो इसमें जब हमने OR जीन की जो है ट्रांसफर की तो उसके बाद जो है इसका स्किन का कलर कैसा हो गया, येलो। तो दीज आर बोथ आर रिच इन कैरोटीन। तो इसमें क्या हुआ कि इसकी कैरोटीन रिच हो गई, एंटीऑक्सीडेंट रिच हो गई। नेक्स्ट है कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप। तो कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल होती है जो हमारी जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियां होती है, जैसे कि कुकुम्बर, मस्कमेलन, वाटरमेलन, बॉटल गॉड, बिटर गॉड। तो दीज आर, ये जो है कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल्स कहलाती है। तो इस पे जो है हमने जो है दो कुकुम्बर की जो है वेराइटीज है उसका क्रॉस किया। तो एक जो है हमारी कल्टीवेटेड कुकुम्बर है जो कि कुकुमिस सटाइवस वेराइटी सटाइवस, जिसका जो अंदर का जो फ्लैश पार्ट है जिसको हम खाते हैं वो जो है व्हाइट कलर का और ग्रीन कलर फ्लैश था, कल्टीवेटेड कुकुम्बर था। और एक दूसरी वेराइटी है वो थी कुकुमिस सटाइवस वेराइटी जिसु बेंगेनेसिस, जिसका जो फ्लैश था वो जो है येलो टू ऑरेंज फ्लैश कलर था उसका। तो हमने जो है उन दो वेराइटी को जो है क्रॉस किया। तो जो F1 आया, तो F1 में जो है जो जो कलर था उसका जो स्किन कलर था वो येलो डेवलप हुआ, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हो। तो इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट एंड बीटा कैरोटीन रिच कुकुम्बर। नेक्स्ट है काउपी, जिसको हम जो है ब्लैक आइड पी भी बोलते हैं और रोंगी भी बोलते हैं। तो इसकी रिसर्च जो है इनिशिएट की गई जीपी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर में। तो उन्होंने 4 वेराइटीज को जो है डेवलप किया जो कि अर्ली मैच्योरिंग थी और उनमें जो है आयरन और जिंक कंटेंट जो है ज्यादा था।
तो वो 4 वैरायटी कौन-कौन सी है? जैसे कि आप देख पा रहे हो पंच लोबिया 1 जिसमें कि 82 पीपीएम जो है आयरन था और 40 पीपीएम जो है जिंक। पंच लोबिया 2 जिसमें कि 100 पीपीएम जो है आयरन था, 37 पीपीएम जो है जिंक। पंच लोबिया 3 67 पीपीएम आयरन एंड 38 पीपीएम ऑफ जिंक। पंच लोबिया 4 51 ppm iron and 36 ppm of zinc. नेक्स्ट है बल्ब वेजिटेबल क्रॉप्स। बल्ब वेजिटेबल क्रॉप्स में हमारी जनरली टू वेजिटेबल्स आती है जैसे कि अनियन एंड गार्लिक। तो agronomical biofortification of garlic plant alien sativum in aspect of increasing selenium content and antioxidant properties. To Stefirta et al. 2016 conducted an experiment to study the foliar treatment with gibberellin and potassium salinate on the yield, selenium content, and antioxidant protection capacity of the leaves and bulbs. So there are generally three treatments controlled where there is no application of any hormones or any fertilizers. Second is the plant is treated with the solution of gibberellin 125 milligram per liter, and third the plant is treated with the solution of potassium salinate 40 milligram selenium per liter. So they they found that the maximum chlorophyll content was found in potassium salinate 39.38 milligram per 100 gram, and the maximum carotenoid content was also found in potassium salinate 11.31 milligram per 100 gram. And also the maximum plant weight, plant productivity and yield was also recorded in the potassium salinate, then gibberellin and control. So next are root vegetables. So orange color in carrot is due to carotene pigment. Yellow color in carrot is due to xanthophyll and lutein content, and it also prevents from lung cancer. Red color of carrot is due to lycopene pigment. Mainly, it is healthy and it prevents from the heart disease and cancer. White white color in carrot is due to is due to the lack of the pigment and it reduces the risk of osteochlorosis. Purple color of carrot is due to beta carotene anthocyanin content and it also protects from the various diseases. Black carrot is due to anthocyanin pigment and it has a very antibacterial, antifungal and anti-cancerous properties. The next one is biofortification of cassava. तो कसावा जिसको हम टैपियोका भी बोलते हैं, जब हम इसकी प्रोसेस फॉर्म करते हैं तो हम उसको जो है साबूदाना जो हम खाते हैं, जो स्पेशली हम ब्रश के टाइम पे खाते हैं, तो सभी वेजिटेबल्स में जो है सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल होती है वो है कसावा। इसमें जो 46% जो है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है। तो इसमें जो इनिशिएटिव लिया गया बाय बिल्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ और भी जो मिनरल्स है उसकी इनरिचमेंट हो सके, जैसे कि जिंक है, आयरन है, प्रोटीन है, विटामिन ए है एंड ई है। तो फिर उन्हें जो रिजल्ट मिले बायोफोर्टिफिकेशन से पहले जो है प्रोविटामिन ए कंटेंट जो कसावा में था वो था 0.5 न्यूग्राम पर ग्राम। आफ्टर जो बायोफोर्टिफिकेशन के बाद जो है प्रोविटामिन जो कंटेंट है वो हुआ 15.5 न्यूग्राम पर ग्राम। So it is a achievement in cassava. So the next one is leafy vegetable crop. So increase nutritive value of transgenic potato by expressing a non-allergenic seed albumin gene through Amaranthus hypochondriacus. So तो एक जो है एमरैंथस हाइपोकॉन्ड्रिकस है, एक जो है हमारा पोटैटो है। एमरैंथस हाइपोकॉन्ड्रिकस जिसको हम ग्रेन एमरैंथस बोलते हैं, अपने लोकल भाषा में हम उसको चौलाई बोलते हैं, जो कि रिच इन प्रोटीन है, और एक पोटैटो है जो कि रिच इन कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या किया कि जो है
एमरेंथस जो ग्रेन एमरेंथस है, एमरेंथस हाइपोकॉन्ड्रियस, उससे जो है जीन्स को जो है निकाला गया, उसका नाम है AMA1 जीन, उसको निकाला गया। उसके बाद जो है उसको जो है पोटैटो में जो है इंसर्ट किया गया। तो उसके बाद जो रिजल्ट मिलते हैं कि जो पोटैटो है उसमें जो है 60% जो है प्रोटीन का जो है इंक्रीज हुआ। तो वो क्या कहलाया? प्रोटैटो। प्रोटैटो मीन प्रोटीन रिच, प्रोटीन रिच potato. Now the achievements of biofortification. So through introduction, the sweet potato varieties such as CIP 440127 from CIP, which is rich in carotene content, ST14 introduced from Japan, rich in carotene content, uh, and beetroot Detroit dark red, deep red variety, which is introduced from USA, which is rich in beta cyanine content. So these are the different varieties developed from the local selection like watermelon, Durgapur Kesar, which is yellow in color and it is rich in carotene content. Punjab Palak variety, Punjab green, which is purple in color and it is rich in anthocyanin. Pusa Lal Tulai variety of amaranthus, which is red in color and it contains anthocyanin pigments. Pumpkin variety is Arka Chandan, which is bright orange in color and it contains carotene content. Next, the variety developed from the clonal selection, the sweet potato variety Coimbatore 5 from CIP 44038, and it is the orange flesh variety which is rich in beta carotene. From pure line selection, the variety is chili, Arca abhi paprika. It is a non-pungent chili which is red in color due to capsaicin content. KTPL 19 developed from IRI, Indian Agriculture Research Institute, which is situated in New Delhi. Its color is red and the pigment is capsaicin. Next is interspecific hybridization. तो इंटरस्पेसिफिक और एक होती है इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होती है कि जब हम कोई भी दो स्पीशीज के बीच में जो है हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इंटरस्पेसिफिक। अगर हम दो वेराइटी के बीच में क्रॉस कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने जो है इसमें जो है टोमेटो की जो है वाइल्ड स्पीशीज का जो है क्रॉस किया है, जैसे सोलेनम साइलेंसिस, सोलेनम हिरसुटम, सोलेनम हिस्टीजमैनी, सोलेनम लाइकोपर्सिकॉइड, उसको क्रॉस किया है सोलेनम लाइकोपर्सिकॉइड के साथ। उससे जो है टेरिटिनॉइड लाइकोपीन जो है रिच वेराइटीज जो है मिली है। Next, intervarietal hybridization, cross between the two varieties is known as intervarietal hybridization. The brinjal variety, Punjab Sadabahar, which is the cross of Japanese long into R34. It is blackish purple in color, which is rich in anthocyanin. Watermelon variety, Arca Jyoti, which is a cross of IIHR20 and Crimson Sweet, which is crimson red in color, which is rich in carotene content. Sweet potato tree Vethna, which is purple skin and yellow flesh, and it is rich in carotene content. So these are the different varieties developed through intervarietal hybridization. So recently released varieties are like tomato, Pusa Upahar, Pusa Rohini, Pusa Hybrid, Pusa Red Plum, which is rich source of vitamin C and lycopene. Paprika KTPL19, source of capsaicin content. Carrot, Pusa Sita, Rudira, Vritti, Yamdangini, and Jyoti, which is rich in beta carotene, lycopene content. Radish varieties are Pusa Jamuni, Pusa Gulabi, which is rich in anthocyanin and lycopene content. And these all are the different varieties developed from different institutes which are rich in different, which are rich in carotenoids, beta carotene, ascorbic acid, and vitamins. Next, the conclusion. So biofortification helps in overcoming nutrient deficiency economically, especially in the rural areas. Application of biofortified crops would benefit farmers by increasing their income in the long run. Functional crops can play an important role in fighting against different type of nutrition deficiency and overnutrition.
So the future thrust is re-strengthening the germplasm collection. So the development of F1 hybrid varieties to induce mutants with high nutritional values, exploitation of molecular biology and the cellular genetics. So there is some close interaction between the nutritionalist and breeder will increase the rate of progress in biofortification of vegetable crops. Thank you.